Singh ji, let me wait for a couple of minutes. Let others join. I'll start. सर छोटा सी स्ट्रेस टेस्ट थोड़ा सा समझा दोगे दोबारा से मोटा मोटा सा You're good with stress testing, which की समझना बोलो क्वेश्चन पूछो होती है आवाज नहीं आ रही आपकी दोबारा अनम्यूट करके बात करो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी उसको याद कर लो बस कि भी ये लाइन याद कर लो कि it captures risk of loss in extreme but possible circumstances. हेलो सर Yes ma'am. सर जो ड्यूरेशन वाले टॉपिक के 2 एग्जांपल्स दिए हुए थे ना आपने बोला था रीड करने को कौन से सर जो बॉन्ड के ड्यूरेशन वाले थे बुक के अंदर हाँ जी 2 एग्जांपल दिए हुए थे स्टडी किट में वो पहले वाला एग्जांपल थोड़ा बता दो पढ़ो मैम रीड करो बिल्कुल सेम है उसमें कुछ भी नहीं है रीड करो उसको सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ये मतलब पहले फार्मूले विच मल्टीप्लाई लिखा होया जो वैल्यूज पुट करी जांदे उत्थे डिवाइड दा सिंबल पाया हुआ है पेज नंबर 32 कॉलेज ड्यूरेशन इज इक्वल टू मॉड्यूल ड्यूरेशन मैंने गलत लिखा है डिवाइड ही है ठीक है सर थैंक यू सर श्योर मैम Recording in progress. चलिए let us start now. So now we will start with come to page number before I start with Basel. उससे पहले आइए आप ये देखो पेज नंबर 43 पे now we come to credit charge capital charge calculations. For credit risk, we have done. See page number 43, 44, 45. We have done it. Then page number 47, 48, 49, we have also done for operational risk. Now, in between, there is one page for capital charge for market risk. Page number 46. This is pending. Now look here, capital charge calculation for market risk. Now in the book he has made this table. Now please understand one thing. Now last time, एक मिनट hold कीजिए. Now understand this first. In market risk, there are 2 types of risks. One is a general market risk and one is specific risk. Now, let us say Madam Deepti has shares of Yes Bank. Now suppose the market falls by 20%. Yes Bank will also fall. So Deepti madam will lose value. This is your general market risk. But suppose there is a fraud in Yes Bank. So then only Yes Bank will fall, market will not fall. This is a specific risk. That here the risk is specific to Yes Bank. Is that clear? Is it clear? बोलिए जी. Now,
Basel says that how do you calculate the capital charge? See, these two formulas are same. If your capital charge is 9, RW is 100 or vice versa. See, if RW is 100, 9% is 9 rupees as capital charge. But how do we calculate this? सर एक बार दोबारा से बता दोगे सर, मेरे फोन में लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो गई थी, वॉल्यूम नहीं आ रही थी सर। सर इधर देखो, दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है जनरल मार्केट रिस्क, आपके पास यस बैंक के शेयर्स हैं, now case number 1, market falls by 20%, तो क्या होगा? यस बैंक shares also fall. Now this is a general market risk. Okay. Case 2. There's a fraud in Yes Bank. So only Yes Bank shares fall. Market does not fall. This is your specific risk. Here the risk is specific to Yes Bank. Is that clear? Yes, sir. Now, this chart is given in the book also, in Macmillan also. How do we calculate the capital charge in market risk? These are 3 columns. One is first category is trading book positions which are interest related. These are bonds. So for these bonds, first you will calculate general market risk. So how do you do that? You simply, whatever is the net position plus horizontal disallowance plus vertical disallowance, these values will be given in the paper. In this you will add the specific charge of this particular bond. Now specific charge is also given in Macmillan. It will be like this. For example, like this. That if it is a government security, the specific charge is 0. If it is a government security approved by government approved securities, then 0. If the securities are not guaranteed by government, then capital charge is 2%, 1.8. Other securities, again 1.8. So like that. So whatever is the value in specific charge, you put here, you add both of them. This is your total market charge for these bonds, instruments which are interest related. Second is equities, all the shares. Here general market charge is also 9% of the bank's total equity position, gross equity position, and specific charge is also like that. You will add both of them, you will get the total market charge for equities. Then foreign exchange. For foreign exchange, there is no market capital charge. You simply have specific charge, that is 9% of the open positions. 9% of the open positions. And this is your total market charge.
Then you will add these three and you will get the total capital charge. So many times he gives you a simple question like this. He will say this specific charge for trading book positions is, let us say this is 10, net position is 5, vertical disallowance is 5, horizontal is 10. Then this is, let us say 30, and this is 40. So if you will simply add all these, this is 5, 5, 10, 10, this is 30, this is 30, and this is 40. So you will see that your total is 100. If your total capital charge is 100, what is your RWA? 100 into 11.11 is equal to 1111. Is it clear? Fine. Now, two things can happen. One is he can simply ask you that for capital charge of market risk, what is the RWA if capital charge is 100? Or he can give you all these values. He will say net position is 5, horizontal disallowance is 5, vertical disallowance is 10, specific market risk is, capital charge for specific market risk is 10, capital charge for equities in trading book is 30, capital charge for foreign exchange position is 40. He will give these values and then he will ask you what is the RWA. So you will simply add these, and based on this you find the capital charge, multiply by 11.11, you get the RWA. सर ये जो 9% कम्यूटेड ऑन बैंक ग्रोस इक्विटी पोजीशंस वाला जो है सर, ये 30 जो लिए सेकंड वाले में आपने टोटल A प्लस B, तो 9% किसी वैल्यू उन्होंने वहां पे दी होगी कोई ना. सर मैं कह रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है जैसे मैंने लिखा, उसमें बस ये फाइनल टोटल वैल्यू दे दी. ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है. नाउ राजेश कुमार जी क्या कह रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशन? हाँ, वो राजेश कुमार जी एक क्वेश्चन आया था, किसी ने मुझे भेजा है, तो जस्ट गिव मी 2-3 days, मैं उसको पूरा फ्रेम, I'll just frame that full question on a PPT, then I'll go for it, okay? But utni देर let us do the questions which have already come earlier, which I know. Now this is the formula. So I want you to take a screenshot of this page. ये तो सर नोटबुक में भी दिया हुआ है ना? हाँ, उसको टिक कर लो. ये this same thing is given in notebook also. ओके सर. Okay. If you see, this same thing is given in on this page number 46. This chart. And this chart. Now,
capital charge for market risk, trading book positions which are interest related. This is this area, this one. He says these are those items that are sensitive to market interest rates. Their value fluctuates with the change in market interest rates. For example, if a bank is holding a 10-year bond of 10% coupon and the market yield goes to 8%, yield goes down, price goes up. The price at which the market is willing to buy the bond will be higher. Second is equities. This one. Here it says these are sensitive to market movements. They are sensitive both general market conditions and specific issues related to that particular share. Example of that Yes Bank I've taken with you. Then he says what all comes in Indian scenario in your trading book. The securities that are held for HFT category, we have already done. AFS category, open positions in gold. Okay. Open positions in foreign exchange, trading positions in derivatives, trading derivatives for hedging the trading positions. And third is foreign exchange open positions. What is open position? You have purchased $100, but you have not sold $100. So this is an open position. Fine. Then he says the minimum capital is further divided into general market charge and so in what is in general market charge? Capital requirement for general market risk are meant to capture the risk of loss arising due to variations in market interest rates. This includes your net position, then vertical disloyance plus horizontal disloyance plus net charge for positions in options. This area. Then next is specific charge. Specific charge, I've already told you, this is the specific charge. So this page, I wanted to read it with you. So we'll do a couple of case studies and you'll understand everything. Now, before I start with any case study, I would like to tell you something. सर एक बार वो स्पेसिफिक चार्ज वाली स्लाइड दिखा देना। कौन सी स्लाइड सर? स्पेसिफिक चार्ज वाला। क्या? तो स्पेसिफिक चार्ज वाली जो एक स्लाइड थी आपकी सेकंड वाली, स्लाइड उसको छोड़ दो, बुक में दिया हुआ है सर, मैंने अभी आपको बुक में पेज नहीं लिखा है 46, उस पर लिखा हुआ है। Now, this slide I will come after a few minutes, not now. Same here. Now, let us understand this slide.
रुको यार, माइक बंद कीजिए प्लीज सर। एक लेटेस्ट चेंज है, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। आपकी मैकमिलन में ना ये पुराना लिखा हुआ है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक्चुअली किसी ने ना मुझे सर्कुलर भेजा था, वो सर्कुलर दोबारा नहीं मिल रहा ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स पे। आई लॉस्ट इट समवेयर। किसके रिगार्डिंग सर्कुलर था? सर ये था कि ये चीज थी। पहले ऐसे होता था कि इन योर टायर 1 कैपिटल यू हैड योर ऑल योर रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स में यू हैड डिस्क्लोज फ्री रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स, और एक होता था रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ये सर 55% ही है, हाँ 55% ये डिस्काउंट ही है। हाँ 55 ही है। तो किसी ने somebody sent me a circular, अब मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने उसमें था कि आरबीआई ने इस रिवैल्यूएशन रिजर्व को शिफ्ट कर दिया है इनटू टायर 2। So that is why in my another slide I updated it like this side। पर हो क्या रहा है कि आई एम अनेबल टू फाइंड दैट सर्कुलर, एंड मैकमिलन में अभी भी पुराना लिखा है। कैन यू चेक इन मैकमिलन इन्होंने रिवैल्यूएशन रिजर्व टायर 1 में डाला है कि टायर 2 में डाला है? सर टायर 1 में डाला है सर। ईयर 1 में डाला है। कौन सा वर्जन है सर मैकमिलन का, विच एडिशन? मेरा तो सर 18 सर है। 2020 का नहीं 18 नहीं, किसी के पास 2021 का वर्जन है बुक का? एनीबॉडी हु हैज अ लेटेस्ट बुक? हाँ जी 20 है मेरे पास। 20 में कहां पे दिए इन्होंने? So then let us stick to this only, as per Macmillan only. Now understand this thing.
चलिए आप छोड़ो, बिफोर आई स्टार्ट विद वेसल जस्ट लीव इट, फर्स्ट कम टू दिस स्लाइड फॉर फ्यू मिनट्स। एक मिनट रुको, somebody has sent me a notification, एक मिनट, ये दोनों एक मिनट सर, रुकिए सर। हाँ जी, सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व और फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिजर्व दोनों टीयर 1 में ही है, दोनों टीयर 1 में ही है सर। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये अभी मुझे ना somebody has sent me a Basel 3 मास्टर सर्कुलर। ये ना सर आपका बहुत पुराना है, मुझे लेटेस्ट चाहिए। सर ये 55% ही है और ये टीयर 2 में भी है, टीयर 1 में भी है। सर वही ना, वो मुझे क्या हुआ क्या कि 21 की है। क्या उन्होंने क्या डाला है 21 में? हाँ 21 में सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है एट डिस्काउंट ऑफ 55%। ओके, टीयर क्या 1 लिखा कैपिटल के एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल। आप पूरा रीड करना मैम इस पैरा को प्लीज। इसमें सर इंडियन बैंक का है, नीचे सारे कॉलम पढ़ूं या सिर्फ? नहीं यही वाला, सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व चाहिए मुझे। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 55%। आगे जो इसमें तो यही है, और उसके बाद जो टीयर 2 कैपिटल है उसमें जो फॉरेन बैंक ब्रांचेज है सर वहां पे दिया हुआ है रिवैल्यूएशन रिजर्व एट ए डिस्काउंट ऑफ 55%। ओके ओके, इसकी एक फोटो खींच के मुझे भेजेंगे मैम व्हाट्सएप में मेरे? हाँ जी सर अभी भेज दीजिए। सर मैं कल बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सर्कुलर था, उसमें मैं देखा था, तो कल मैं इसको सेंड कर दूंगा, दोनों में यही दिया हुआ है सर। क्या चीज सर? सर ऐसा है कि मैंने ना वो सर्कुलर पढ़ा था, इसीलिए मैंने वो पीपीटी को चेंज किया। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने उसके बाद मैंने भी बहुत ढूंढा, पापा ने भी बहुत ढूंढा, बट हमें ना तो वो सर्कुलर मिला ना कहीं क्लैरिफिकेशन मिली। सो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू डबल चेक बिफोर टेलिंग यू, और कोई रीजन नहीं है। हम लोग के बैंक में भी जो सर्कुलर आ रही है उसमें अभी यही दे रहा है सर 55। क्या दे रहा है सर? क्या दे रहा है? जो बैंक से सर्कुलर आ रहा है वो क्या दे रहा है बताओ? उसमें भी यही दे रहा है सर 55% जो टीयर 1 में ले रहा है सर, at a discount of 55%. Yes sir, 45% will be taken as CET1। हाँ ठीक है ना सर, ये बेसिकली है कि अगर आपने लेट अस से यू हैव अ फिक्स्ड एसेट, योर वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट इज 1 करोड़, नाउ यू हैव रीवैल्यूड इट टू 2 करोड़, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 50 यू विल डिस्काउंट इट बाय 55%. So 45 lakh you will take it in the tier 1 और बाकी जो 55 है that will go to tier 2। ठीक है ना? फिर सेम है सर, then there is no change। चलिए नो प्रॉब्लम। अच्छा अभी तो देखिए जस्ट सेम है तो, हाँ सेम है। चलिए नाउ अंडरस्टैंड का भी वही है सर। हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू सर। नाउ लुक हियर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बैसल क्या कहता है? व्हाट डज बैसल सेज दैट, या ना एक मिनट यार, यहाँ पे ना सबको दिक्कत आती है, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इसको कितना लंबा चौड़ा करके आपको बताऊं। एक मिनट रुको, एक और सर्कुलर भेजा समबडी, जस्ट लेट मी कंफर्म इट वंस। ठीक है मैम, ये आपकी बुक कौन सा एडिशन है मैम? ये 2021 सर। ठीक है, दैट इज फाइन। मुझे बस एक ये देखना है, इधर देखिए। चलिए पहले लेट मी शो यू वन सिंपल
calculation, first you understand this chart. What is this chart? If you remember, सबसे पहले we had सबसे पहले we had credit risk. In credit risk, basically यार पहले ना आपको कहानी सुनिए इसकी। ये कहानी क्या है कि चलो छोड़, मैं बैसल स्टार्ट करता हूं। लेट मी स्टार्ट विद बैसल। Sorry, I'm just trying to figure out what will be the best way for you to understand. Now, please understand this is a capital structure of a bank. Bank's total capital is divided into एक minute, somebody has again sent me a master circular. एक minute, okay, hold on. ये बहुत पुराना, this is too old. This is too old, man. ये नहीं। Mr. Mayur जो आपने भेजा है, this is too old. Okay. Now, Tier 1 capital is known as permanent capital or core capital. Tier 2 is non-core or non-permanent capital. Under Tier 1, it is further divided into two parts. That means under Tier 1, it is further divided up into two parts. One is common equity Tier 1, other is additional Tier 1. Common equity Tier 1 has your paid up capital of the bank. When the bank was opened, what was the original paid up capital? Then the reserves. Under reserves, you have disclosed or free reserves. Then you have statutory reserves. RBI says that whenever you make a profit of 100 rupees, 25% you have to put it in reserves. Then capital reserves. This is on the sale of capital assets. You have a building which you bought 30 years ago. Let us say headquarters of Punjab National Bank, old headquarters, which was in Bikajikama place. So that must have been purchased very cheap at a very, very low price. Now, if you sell that today because you have made a new headquarter at Dwarka, I guess, PNB, Dwarka mein aapka headquarter na?
So now if you sell the old building, it will sell at a very, very high price. So let us say you bought that, original value of that building was 1000 crores. Now you sell it for 3000 crores. So this 2000 crore is your capital reserve. सर उसी तरह थोड़ा डिस्क्लोज रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व को समझाइए तो। Statutory reserves मैंने आपको बताया ना सर, that whenever you have 100 rupee profit, RBI says every year from your profit transfer 25% into statutory reserves. Banks who have sufficient capital, they don't need it. And last is revaluation reserve, this area. So this I'll just bring it back here. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मेरा एक्चुअली सिग्नल के इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या रिपीट करना मैम, बताइए। सर अब टायर 1 कैपिटल जो बोले थे उसी के बाद से डिस्कनेक्ट हो गया है। मैम टायर 1 में आपको सिंपल ये वैल्यू याद करनी है, यू हैव टू रिमेंबर ऑफ दिस। द टायर 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉमन इक्विटी टायर 1 and additional tier 1. Common equity tier 1 में you have your paid up capital, you have your reserves, you have your statutory reserves, you have your capital reserves, then you have your revaluation reserves. What is a revaluation reserve? You have to understand this. Let us say this building belongs to Madam Deepti. She bought it for 3 crores. The adjoining building belongs to Canara Bank. They also bought it for 3 crores. Now in both the books, both the person's books, the value of this fixed asset is 3 crores. Deepti sold it for 4 crores and went away. Now Canara will also say that it's a same location, adjoining building. If this has been sold for 4 crore, that means the value of my building is also 4 crore. So Canara Bank wants to revalue this building from 3 crore to 4 crore. That means they want to revalue by 1 crore. Okay. RBI says that you cannot revalue it by 1 crore like this. If you want to revalue it, so you will discount this by 55%. That means 45 lakh will come here in common equity tier 1. Is that clear? And remaining portion of 55 lakh you can keep in tier 2. समझ आया जी कि नहीं? हेलो? Yes sir. Yes sir. हाँ जी सर, यस सर। Then under additional tier 1 you have IPDI, innovative perpetual debt instruments. What is a perpetual debt? These are perpetual bonds. Bonds who have a very high maturity, very long maturity. Okay, like, or some bonds are known as perpetual bonds. Perpetual means जो कभी खत्म नहीं होता, which never goes away, which never ends. For example, I give 1000 rupees to Madam Deepti as a loan forever.
she has to pay me 6% interest forever. Every year she will pay me 60 rupees as interest, 6% of 1000 forever. That means this 1000 rupees is not going to come back. But I will only receive this 60 interest. If bank has issued such kind of bonds, if I am a bank and I have taken this money from Madam Deepti, so this is as good as my money because I am not going to return this 1000 rupees because I have taken this 1000 rupees forever. समझ आ रहा है जी कि नहीं? I have taken 1000 rupees loan from Deepti forever and I promised her 6% forever. Of course, there are certain clauses, but you just remember IPDI. And this can be maximum 15% of tier 1. That means if tier 1 is 100 rupees, this IPDA cannot be more than 15 rupees. Next is PNCPS, perpetual non-cumulative preference shares. Now IPDI and PNCPS together, they cannot be more than 40% of tier 1. So IPDI plus PNCPS together they cannot be more than 40%. If they are more than 40%, the additional portion will come here. If they are more than 40%, the additional portion will be shifted to tier 2. Suppose karo 81, your IPDI plus PNCPS becomes 50 and your tier 1 is 100. So 40 will come here and the 10 will be shifted here. Is that clear? Is it clear? Yes or no? नहीं सर. सर ये IPDI और PNCPS ये दोनों मिला के 40% ऑफ टायर 1 से ज्यादा नहीं होंगे. अगर 40% से ज्यादा हो गया तो वो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है वो टायर 2 में ऊपर चली जाएगी. इसको अपर टायर 2 भी बोल देते हैं. वी कॉल इट एज अपर टायर 2 ऑल्सो. अपर टायर 2 इज अ एडिशनल पोर्शन in excess of 40% of this PNCPS plus IPDA. Is it clear to everyone? सर ये जो 15% और ये 40% बताया, मतलब ये किसका है? ये वैल्यू का निकाला है. अगर आपकी टायर 1 100 रुपए की है, if the tier 1 is 100, IPDA can be maximum 15 rupees and IPDI plus PNCPS together can be maximum 40%, that is maximum 40 rupees. ये समझ में आया कि नहीं आया? सर बोलो मैम. सर जो टायर 1 है वो दोनों दे एडिशनल बंदा, मतलब जो CET है और AT है. हाँ जी मैम, देखो ध्यान नाल एरोज देखो, चेक दी एरोज. हाँ जी सर, अगर इन्हां दोनों दे कॉम्बिनेशन नाल बन रहा तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ नहीं मैम कोई वैल्यू नहीं. ਤੁਸੀਂ वैल्यू ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ. You just understand the concept. You don't go after the value. All I am saying that if suppose the total tier 1 is 100, IPDI can be maximum 15 rupees. ठीक है सर.
and IPDI plus PNCPS together cannot be more than 40 rupees. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Now suppose karo your IPDI plus PNCPS together they are, let us say, 55. Tier 1 is 100. So maximum they can be 40%, but this is 55%. So what you will do is you will keep here 40, you will keep here in additional tier 1, and 15, this is the excess of IPDI plus PNCPS. This you will take it into tier 2. Is that clear? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. In a school bus, they say that there can be only 40 students in one bus, in bus number 1. But suppose on the bus stop 55 students come, what will you do? 40 will go in bus number 1, the other 15 will be shifted to bus number 2. समझ आ गया कि नहीं? सर जैसे IPDI में अगर 20 हो जाए उसका भी 5 इधर आ जाएगा ना? नहीं सर, हाँ उसका भी 5 इधर आ जाएगा बिल्कुल, बिकॉज ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है ना। हाँ जी ठीक है। Now what comes in your tier 2? Undisclosed reserves, ratta maar lo, just memorize it. General provisions and loss reserves, ये जो NPA की provisions करते हो, all those things, they are tier 2. Investment fluctuation reserves. Earlier, 2-3 years back, this investment fluctuation reserve was part of your tier 1. But now RBI has shifted it into tier 2. Hybrid debt capital instruments. और last है subordinate debt. This is very important. Subordinate debt is written in tier 2, but it is maximum 50% of tier 1. Subordinate debt होता है कि if the bank goes into bankruptcy, तो you will sell all the assets of the bank. How will the money recovered be given? First, your people who have got late. Page number 6. What page number? This capital responsive, because I came home late. There is no page number. Just look at the screen. Oh. So subordinate debt का मतलब क्या होता है? इधर देखो. Suppose करो, Madam Deepti has a company. She has taken loan from a bank. उसके बाद she has taken some shares. I become a shareholder of Madam Deepti. So in case Madam Deepti goes bankrupt, all the assets will be sold. पहली recovery bank की होगी, debt की होगी. Then whatever is left will be divided between me and Deepti. Subordinate debt होता है जिसका नंबर बहुत लेट आता है. Sub means below. So you simply remember it that subordinate debt is
kept in tier 2, and it is maximum 50% of tier 1. And last is PCPS, perpetual cumulative preference shares. Non-cumulative preference shares are in tier 1, cumulative preference shares are in tier 2. Note it down, please. Write it down, this one. सर ये माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला कुछ नहीं है सर, नोट कर लो बस, याद कर लो। माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट छोड़ भी दोगे कुछ नहीं होगा। सर अनडिस्क्लोज रिजर्व कौन से होते हैं? रट्टा मारो सर। सर आप क्वेश्चन का बताओगे थोड़ा सा कि कैसे आएंगे बाद में? अभी मैंने नहीं बताना, अभी आपको सिर्फ जितना बोला उतना करो, सिर्फ आप अभी नोट करो, मैंने कुछ नहीं बताना इसके अलावा, ना ही आपको सोचना है। सर फुल फॉर्म ऑफ सीईटी? कॉमन इक्विटी टायर 1। 80 सर। एडिशनल टायर 1। सर ये रिवैल्यूएशन एट डिस्काउंट ऑफ 55% वाला एक बार बता देंगे? जैसे सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मैंने क्या बताया था, बोलो। हाँ, आपने जो बताया था जैसे 3 करोड़ की वैल्यू है, एक एक बिल्डिंग के अंदर 2 हैं पार्ट हैं, किसी एक ने बेचा उसको 3 करोड़ में। आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, मैंने पार्टनर तो वर्ड ही नहीं यूज किया कभी। नो सर, जस्ट मतलब एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था। एक सिंपल सी बात है, आपके पास एक बिल्डिंग है, यू हैव अ बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 3 करोड़ है, लेकिन अब आप कहते हो कि आसपास की बिल्डिंग्स 4 करोड़ में बिक रही हैं, तो आप कहते हो कि मेरी बिल्डिंग भी 4 करोड़ की हो गई। आपने एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वाला पर्सन बुलाया, ही इवेल्युएटेड योर प्रॉपर्टी टू 4 करोड़, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो वो जो 4 करोड़ हो गया, तो आपने कितने से वैल्यू इंक्रीज की? 1 करोड़ से। यस। तो बेसल कहता है कि यू विल नॉट इंक्रीज इट बाय 1 करोड़। ये 3 का जब आपने 4 करोड़ किया, तो उसमें से सिर्फ 45 लाख यू विल टेक इट इन टायर 1, रिमेनिंग विल गो टू टायर 2। ओके। सो इसलिए यहां पे डिस्काउंट ऑफ 55% है। हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस थिंग? नो सर। डू इट फास्ट प्लीज।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो लिखा हुआ है माइनस इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये CET1 का पार्ट है या पूरा ओवरऑल टीयर 1 के लिए है? ओवरऑल टीयर 1 के लिए। छोड़ दो इसको, ये पूछता नहीं है कभी, आप मत नोट करो इसको, डोंट नोट इट। ओके ओके सर। Have you Done, noted? sir. Please tell me. Done, sir. Done, sir. Now, what is subordinate debt? Just write the first two lines. Nothing else. You don't need anything else. Only this and this. Note कर जो लो, sir. बाकी लाइन्स है वो सीनियर स्केल्स को प्रमोशन में आती है, आपको नहीं आएगा. So what is subordinate debt? It is a long-term unsecured loan originally issued for a period of more than 5 years, and at any given point of time the remaining maturity of this loan should be more than 1 year. Second point you have already written that subordinate debt is part of tier 2, but it can be maximum 50% of tier 1. Just note down these first 2 points, that's all. सर इसका क्या मतलब है? सबऑर्डिनेट डेब्ट इज पार्ट ऑफ टियर 2 कैपिटल, सॉरी, remaining maturity should be more than 1 year. सर आपने मेरे, you gave me a loan for 7 years, so I will keep it because it is an unsecured loan for more than 5 years. I will keep it under subordinate debt. और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, the maturity of this loan goes on decreasing. भाई, you have given me a loan today for 7 years. तो आफ्टर 6 years क्या होगा? कितना टाइम रह जाएगा इस लोन के खत्म होने में? 1 साल. 1 साल. So this is the remaining maturity. Okay. Mr. Mahinder Pal, आपकी आवाज नहीं आ रही. Please type whatever you want to ask. हेलो. हाँ जी, बोलिए सर. No. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप टाइप करिए. Remaining maturity below 1 year. मिस्टर महेंद्र पाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप अपना क्वेश्चन टाइप करिए. प्लीज टाइप योर क्वेश्चन. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड लगा दो ना सर. जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सबऑर्डिनेट डेट मैम. इसका मतलब क्या है, इसको सुनो एक बार. लिसन टू मी. नाउ दिस इज अ, लेट अस से दिस इज Canara Bank. Canara Bank has taken a loan.
This is an unsecured loan for 7 years. Now in the balance sheet, this is your equity, this is your borrowed fund or liabilities, these are your assets. Now you tell me, when you take a loan, where should you write the loan? Is loan your liability or your equity? Liability. Asset. यार लोन आपने लिया है, you have taken a loan. Loan is a liability. Okay, loan is your long-term liability. But RBI says that bank has taken a loan, and that also unsecured loan, and for more than 7 years. You can put it in your capital. You can keep this loan in your capital under your Tier 2 capital. You can write this loan over here. समझ आ गया? Because it is an unsecured loan and more than 5 years. Now, after 6 years, how much time is remaining for this loan to mature? 1 year. 1 year or less than 1 year. After 6 years, the remaining maturity is 1 year or less. Then what we will do is, we will remove this loan from this Tier 2 and we will shift this loan here in the liabilities. Is that clear? Yes, sir. ठीक है जी, loan is always a liability, but RBI says that because it is an unsecured loan and more than 5 years, you can keep it in your capital under Tier 2 capital. But kitni der? Till the time 1 year, till the time more than 1 year is remaining, you can write it here. The moment remaining time is 1 year or less, you will remove it from here and you will shift it here. Is it clear or not? You only and only need this definition. That's all. And this point, second point, he can ask you that subordinate debt is taken where? Subordinate debt is written in the Tier 2 capital. But it can be maximum 50% of Tier 1. That means if your Tier 1 is rupees 100, then subordinate debt can be maximum rupees 50. It cannot be more than 50 rupees. And it is written where? In Tier 2. Is that clear or not? Clear, sir. Now, write down these 2 points. Tier 1 capital is also known as core capital. It provides the most permanent and readily available support to bank against unexpected losses. अब इधर देखो, when the bank gets into trouble, अब इधर देखो, what happened in case of Yes Bank? Under this capital, there was Tier 1 and there was Tier 2. When Yes Bank came into crisis, when there were so many NPAs, first we try to fulfill the loss from this Tier 1 because this is the core capital. It provides the most permanent support to the bank against unexpected losses. Is that clear? Tier 2 capital contains elements that are less permanent in nature. Tier 2 capital is also called supplementary capital. So suppose karo, there are huge losses. First your Tier 1 will be used.
If tier 1 is over, then we will start eating tier 2. And suppose tier 2 is also over and still the losses are not covered, then the bank will be bankrupt. Then you will close the bank. Okay, just write down these 2 points. सर टायर 2 लिक्विडेशन के केस में करते हैं ना, जब लिक्विडेशन की जरूरत पड़ती है तब बाद में करेंगे, आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नोट करिए पहले. Next, what is capital adequacy ratio? Now please understand this thing. Let us say for a bank, let us say we are taking the example of Canara Bank. Canara Bank has 2 assets. Cash with RBI 100 crores and corporate advances 100 crores. Total assets are 200 crores. RBI says that the risk weight on cash balance with RBI is 0 risk. There is no risk. But the risk on the corporate loans is 100%. So what is your risk weighted asset? Risk weight multiplied by asset. On your cash, there is no risk. On your corporate advance, 100% into 100, that is 100 crore risk. So this 100 crore is the risky asset. Is that clear? Is that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This 100 crore is your risky asset. Now, if I write this risk-weighted asset equals to 100 crores, what should I write here so that I get 8% as answer? Tell me. 100 crore का कितना परसेंट 8%, कितने करोड़ 8% होगा? बोलो. 8 crores. So Basel said that if you are taking a risk of 100 crores, the minimum capital that you should have should be 8 crore. RBI said scheduled commercial banks in India will keep 9%. That means for every 100 crore risk, they will keep 9 crores. And private banks, new private banks will keep 10%. That means for every 100 crore, they will keep 10 crores. Is that clear? Yes, sir. Note it down, please. So now have you understood what is a capital adequacy ratio? Sir, what was the meaning of the second paragraph from previous slide, sir? पहले इसको नोट करो सर. The limit is